Hello friends, welcome to my YouTube channel Prakash Coaching Classes. From today we are going to start the science and mathematics chapters of class 9th. So today we are starting with science chapter. The first chapter of the science is from the physics part, which is motion. Now what is motion? Let's try to understand it in simple terms. कभी आपने देखा है कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं, whether you travel it by on the foot, on by the vehicle, or by plane or by ship. So that is known as motion. एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रैवल करने को हम मोशन कहते हैं. Definition: the motion of an object is perceived when its position changes continuously with respect to some stationary object. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रेफरेंस, कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं. सपोज आपको एक सिटी से बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप बॉम्बे से कर रहे हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, उसी को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. और इस रेफरेंस पॉइंट की इम्पोर्टेंस फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा है. तो एक रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है, उसको रेफरेंस पॉइंट के लिए वहाँ से हम मेजरमेंट शुरू करते हैं कि कहाँ आप डेस्टिनेशन की तरफ कहाँ जा रहे हैं. मोशन समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में पहले हमें समझना ज़रूरी है. बेसिकली मोशन को समझने के लिए हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ का अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है. इसीलिए दो टर्मिनोलॉजीज से शुरुआत करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड what is distance and what is displacement. The distance traveled by an object is the length of the actual path traversed by an object during the motion. Let me help with an example. Suppose a person is starting from Mumbai to Delhi and then going to Jammu and then again coming to Delhi. Right? So the total distance which will be covered is from Mumbai to Delhi plus Jammu and then again covered to Delhi. So that is meant by the distance, the total path length or the total distance, total area, total length which is traversed by the object. पर्सन को ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसी भी चीज़ को हम फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की तरह डिस्क्राइब करते हैं. नाउ लेट्स कम विद द टर्मिनोलॉजी डिस्प्लेसमेंट. The displacement of an object in motion is the shortest distance between the initial and the final position of the object. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंस समझना है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होती है ऑब्जेक्ट की. इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. I will take an example to make you understand better. देखिए, एक एग्जांपल लिया है. हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है. ए को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया या स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है, जो कि यहाँ पे कहा गया है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है, बी पे जाता है, सी पे जाता है और वापस वो बी पे आता है. ए से बी की डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर. बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर. टोटल ए से सी की डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर. ठीक है. तो केस हमने जो लिया है वो ए से बी, बी से सी, सी से वापस बी पे, ए से बी से सी और वापस सी से बी. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो कितनी होगी? 50 किलोमीटर्स. कैसे हुई? ए से बी गया 10, बी से सी गया 20, कितना हुआ? 30 के बाद सी से वापस बी पे आया तो कितना हुआ? 20 और. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 50 किलोमीटर, जो कि इसकी डेफिनेशन में भी कहा गया है. लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन. तो ये 50 किलोमीटर्स. सिंपल, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नाउ लेट अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ने यहाँ पे क्या कहा है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल कौन सा था? कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? ए पोजीशन से. और फाइनल कितना पोजीशन पे आ गया? ए और बी.
ए और बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? यही शॉर्टेस्ट पाथ है। तो कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर्स। तो इसीलिए आंसर है आपका 10 किलोमीटर्स। सो इस तरह से हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। नाउ one important point which I need to highlight to you is the distance during motion can be 0 or negative, while displacement cannot be 0 or negative. Why? Because distance is traveled always calculated on the path length, and path length can never be 0. If you want to go to Delhi to Mumbai and return back from Delhi to Mumbai again, the distance is the total path length covered between the initial and final point. So that is why the distance can never be 0 or negative. However, on the other side, the displacement can be 0 or negative. Suppose if we want to go to Delhi to Mumbai to Delhi and return back to Mumbai, the displacement is 0. Why? Because the initial and final point are same. And suppose if you want to go to Delhi to Mumbai and return back to Mumbai and then want again to go to Bangalore, then your displacement is negative. I will let you know why. But to understand that why the distance is negative, we need to understand there are two quantities in physics. One is scalar and second is vector. Scalar quantity has magnitude and but no direction. Magnitude but no direction. That is scalar quantity. Example is distance. In distance, we cover the total path length, and that is the magnitude. We don't even bother to know the direction. But the second quantity is vector quantity. It has both magnitude and direction. Example is displacement. So when we write the displacement, you can understand the importance of direction. Suppose if you want to go from Mumbai, you can go anywhere. Means I can go to Surat, either to Bangalore, Pune, anywhere. But as and when you are saying that I want to go to from Delhi to Mumbai, you are specifying that you are going in the specific direction, and that's where the quantity is known as vector quantity. And that is the importance of the direction, right? So these are the two important quantities, and we will study this scalar and vector, each of the parameters which we discuss in during the motion. There are the two important terms which are, first is uniform and second is non-uniform motion. Now what is this uniform and non-uniform motion? When an object travels equal distances in equal interval of time, the motion of the object is said to be uniform. Equal interval in distance in equal interval of time. That is known as uniform motion. Second is non-uniform motion. In non-uniform motion, when an object travels unequal distances in equal interval of time, the motion of the object is said to be non-uniform. In equal distance, in equal interval of time, the motion traveled covers unequal distances. That is what usually in our day-to-day life we do, right? We don't cover in equal interval of time the equal distances. We usually cover non-equal. This is a ideal case and this is the real case in our day-to-day life. I will show you an example how we can understand the difference between a uniform and a non-uniform motion. Now let's understand the difference between the uniform and non-uniform motion with the help of an example. Consider that there are two objects, object A and object B. Object A is traveling at a uniform motion, and object B is traveling in a non-uniform motion. Let's see what are their distances at various intervals of time. If you see, the time is divided into the difference of 15 minutes, 9:30, 9:45, 10 and 10:15. Distance traveled by A is 10, 20, 30 for 8 various intervals of time. The distance traveled by an object B is 12, 19, 23 and 35. So if you see here, the difference interval time 15 minutes and the distance travel is 10 kilometers, and difference is 10, then again is 10. On the other side,
The distance traveled by the object B difference is 7 kilometers, 5 kilometers, 4 kilometers, and 12 kilometers. So if you see, object A is moving in a uniform motion, and object B is moving in a non-uniform motion. So hope this uniform and non-uniform motion clears. Next is speed. Next parameter to measure motion is speed. Speed is the distance traveled by the body in a unit time. Distance upon time is speed. Its SI unit is meter per second, and it is a scalar quantity. It means it has only magnitude but no direction. To this, we are coming to the end of today's video. So thank you for watching this video. Do like, subscribe, and share your comments.